Hi guys, how are you? I hope all you are doing good. Welcome to the Edu everybody. Let's experience education. So in the last video, we have gone through the HTML and the HTML document. I hope you are clear with this. Now in this video, we will go through first thing is the doctype HTML. Second is the HTML element that is called tag as well. The third is what is self-closing tag and what is empty tag. So let's begin. So what is doctype HTML? So it is not a tag. First of all, you need to take care. It is not a tag. An HTML document must start with a doctype declaration. It is an instruction to the web browser about what type of version we are using. It ensures that the web browser is parsed in the same way by different web browser. It is an information to the browser about what type of document it should expect. It is not a case sensitive. So what it means, इसका मतलब ये है कि जो डॉक टाइप जो टॉप पे होता है वो हमें ब्राउज़र को बताता है कि ये HTML है और इसका वर्जन 5 है. इफ़ यू डू नॉट राइट इट, एनी ब्राउज़र यू कैन टेक, वो इतना स्मार्ट है कि वो खुद से जान जाता है कि ये HTML है और उसको वो अपने हिसाब से रेंडर करने की कोशिश करता है और वो रेंडर भी कर लेता है. लेकिन अगर हम डॉक टाइप ना लिखें तो क्या होगा? तो ये तो आपको एक क्वेश्चन दिमाग में रखना है. सेकेंड पॉइंट क्या आता है कि इट टेल्स अबाउट द वर्जन. सो ये ब्राउज़र को बताता है कि वर्जन क्या है. ये बताता है कि मैं HTML हूँ, तब ब्राउज़र जान पाता है कि HTML है और वो उस HTML डॉक्यूमेंट को रेंडर करता है. अगर हम किसी भी HTML डॉक्यूमेंट के पहले डॉक टाइप को लिखते हैं तो जितने भी ब्राउज़र हैं वो सब उस HTML डॉक्यूमेंट को सेम वे में पार्स करें, मीन्स सेम वे में उसे रेंडर करें. अगर हम नहीं लिखेंगे तो अलग अलग वेब ब्राउज़र की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं. वो अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को रेंडर करने की कोशिश करेंगे. समटाइम्स ऐसा हो भी सकता है कि डॉक्यूमेंट सही से रेंडर ना हो और समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि डॉक्यूमेंट सही से रेंडर हो जाए. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव. व्हाट इट मीन्स? It means if we write doctype HTML, it is same as this one, it is same as this one, it is same as this one. It is independent of the case. In what case we are writing, whether in the lower case, in the upper case, it doesn't matter. It is case insensitive. Now the first question which I have arises, if we do not write the doctype, then what will happen? Okay, it is not required. First of all, it is not required, but it is highly recommended to do so. The reason it is required for legacy reason. When omitted, browser tends to use a different rendering mode to lay out the page that is considered to be old and created against web standard. कुछ वेब स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट बनाए गए हैं कि अगर मतलब वेब पेज को ऐसे रेंडर करना है, अगर उसे हम डॉक टाइप नहीं बता पाएंगे, अगर उसमें डॉक टाइप नहीं इंक्लूड होगा तो वेब ब्राउज़र नहीं जान पाएगा. सो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उसके अकॉर्डिंग वेब पेज को रेंडर करने की कोशिश करेगा. अगर हम डॉक टाइप इंक्लूड करते हैं सो ये इंश्योर करता है कि ब्राउज़र अपना बेस्ट एफर्ट देगा उस पेज को दिखाने में. आई होप यू आर क्लियर. अगर देते हैं तो भी अच्छी बात है, अगर डॉक टाइप लिखते हैं तब भी अच्छी बात है, डॉक टाइप नहीं लिखते हैं तो भी अच्छी बात है. ब्राउज़र इतने स्मार्ट है कि वो खुद से जान जाएंगे और पेज को रेंडर कर देंगे. बट हो सकता है कि कोई ब्राउज़र हो जो ज़्यादा स्मार्ट ना हो, सो वो शायद वेब पेज को अच्छे से रेंडर ना कर पाए. सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अस, बट वी हैव टू राइट. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. वी कॉल्ड इट एज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ कोडिंग. नाउ द सेकेंड थिंग, इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव नो मैटर वॉट वी राइट इन अपर केस और लोअर केस. ऑल फोर एग्जाम्पल्स आर सेम. Now the second thing is what is HTML element? We call them as a tag. So an HTML element is defined by a start tag. Then in between there are some content and we have a in tag. You can call the HTML element as tag element, or we can say the tag only. HTML element is everything from start tag to in tag. Now what's the syntax? Syntax is tag name, then we write something here, then it is tag name. So in the previous class we have gone through the 4 tag, that is HTML tag, head tag, title tag and a body tag. Now today we will go through h1 tag, h2 tag, h3 tag, h4, h5. All these are called the heading tag. Heading tag means we are using these tag for defining the headings. As we can see, if I write to this one HTML element, then we will write inside the h1 is the biggest tag,
that has the biggest font size. Now h2 have somewhat lesser size, s3 has somewhat lesser. So in the same manner, h1 is the bigger one and s6 is the smaller one. It has a smaller size. Whatever you will write inside this, that has a small font. Then we have a paragraph tag. Then we have an emphasize tag, image tag, br tag, called it as a horizontal tag. It's an anchor tag. So in today's video, we will only go through the theory part. In the next video, we will code all these tags so that you can get a clear idea what's the meaning of this tag and how we can use it. Okay, but there are something you have to notice. As you can see, we have mentioned here an HTML element has a start tag and an end tag, but as we can see, this tag have no content and no end tag. A chart tag have no content and no end tag. Image tag also do not have any end tag. So should we call them as a HTML element? Yes, it is HTML element, but we call them as a self-closing tag. What is self-closing tag? A self-closing tag in HTML is a kind of HTML tag that does not need to be closed manually by its closing tag, which means it does not have a separate closing tag like this one. In the previous, like in the BR tag, we do not have this closing tag. Some few closing tags are input, horizontal tag, break tag, and image tag. The self-closing tag in HTML are sometimes also called the empty tag, void tag, and singleton tag. Why so? Because there are no content in between, so we call them as empty tag. When we have some content, we call them as a tag, but when there is no content, we call them as an empty tag. This means that these tags have no content and cannot have any children. According to HTML5 specification, there are 5 empty tags, and what all are these? Area tag, break tag, embedded tag, image tag, keygen tag, meta, source, WBR, base, column, horizontal, input, link, param, track. So these are all called the self-closing and empty tag. Now in this video, that's it. In the next video, we will go through the coding part. We will code all the tags. We will go through the HTML element and we will start coding. Now in the next video, be ready. I hope all you are clear. Thanks guys. I will meet in the next video with the next video. Till then, bye bye. Take care.